All right, see, when you give a sampling technique, you're supposed to tell the examiner how you did that because he wants to know whether you know what it means or not. Otherwise, it's going to be easy to get marks. So, random sampling is very difficult to pull off. Is the ideal sampling technique, but it's very difficult to pull off, right? It's because it requires, see, random sampling means that every person that could be selected in your experiment has an equal chance to be selected. Anyone that is 30, male, female, in this age range and in the construction industry who writes magazine and has this experience, everyone in the entire world is going to be eligible in the experiment participate, right? It's not everyone who is in this criteria in Islamabad. I'm going to talk about everyone in the world, right? So for you to execute that, you would need everyone's name from the entire world who falls under this category. So you need to gather all the names that falls in this category, then randomly selected from that list. If you don't get to do that, right, then your sampling is not random, is opportunity. Why globally? All right, because the definition is, right, the definition is every person has an equal chance to be represented in your sample. Every person. Now, this can be countered in two ways. Countered. Either you like put a boundary on your sample. If you write that, gonna be localized to Islam. But if you keep it open, gonna be global, right? So one way to counter that is like you name the city full stop. Like that's then kind of like limits everyone Islam. But you need to write that. If you don't, by definition, random sampling is gonna be everyone who is going to meet the sampling frame. It has to have an equal chance to get selected. So when you do Islamabad, right, you're going to only select Islamabad. But again, you have to select everyone from Islamabad that falls in this sampling criteria. Need to get every person's name on that list. Then you select randomly. Why globally? Why is this so tedious? See, you might have been taught this before in your AS. Random sampling is the most generalizable, is the most representative sample. You remember that, right? It is the most representative. Yes, all right. And the reason it is representative because this sampling technique has the highest chance to include everyone. And I do mean everyone, right? The reason why opportunity sample and volunteer sample is not representative because volunteer sample are the people who are going to come to you. Not everyone is going to come to you. So therefore, obviously, वहीं से generalizability कम हो जाती है. Not everyone's going to come to you, right? Opportunity sampling is the sampling technique where you go to people. Voluntary sampling में लोग तुम्हारे पास आते हैं. Opportunity तुम लोगों के पास जाती हो. अब तुम जिस लोगों को अप्रोच करोगी, right, obviously it's going to be based on your convenience. As in क्या मतलब, जो तुम्हारे करीब होगा, जो तुम्हारे अच्छे रिलेशनशिप होंगे, राइट, जो तुम्हारा क्या कहते हैं मकसद मीट कर रहा होगा, राइट, एनीथिंग, जो पैसे नहीं मांग रहा होगा पार्टिसिपेट करने के लिए, एनी फैक्टर दैट फेवर्स यू, you're gonna approach them. रैंडम सैम्पलिंग के अंदर ये नहीं लिखा. रैंडम सैम्पलिंग है भले जो दूर है दुनिया किस कोने में है, अगर वो क्राइटेरिया मीट करता है आएगा इसके अंदर. एंड उसके भी इतने चांसेस हैं इंक्लूड होने के लिए जितने तुम्हारे पड़ोसी के भी चांसेस इंक्लूड होने के लिए. सो कोई बायसनेस नहीं होती सेलेक्ट करने में. That's why it's represented. That's why it's best for representation, but very difficult to pull off. So random sampling by definition अच्छा लगता है, but it's very difficult to pull off. So like my advice for you to like don't go for random sampling क्योंकि तुम लोग फंस जाओगे. Either sampling sample के अंदर तुम कोई सिटी नेम नहीं लिखोगे
वहाँ फंस जाओगे या तुम रैंडम सैम्पलिंग के प्रोसीजर एक्सप्लेन करने में फंस जाओगे. So like random sampling, yeah, I like that you remember it, but don't go for it because it is something that's good, but it's very difficult to pull off. तो realistically speaking, कोई भी experiment आज तक random sampling के base पे नहीं हुई psychological. So like it's like the concept clear. All right. So like you have two opportunity. All right. Opportunity sampling. बताओ कैसे करोगे. अब तुम जाओगे उनके पास या तुम खुद सेलेक्ट करोगे. So you will approach a. You're gonna approach a certain construction company who is located in this vicinity. We're gonna ask permission from the company, and then we're gonna conduct our experiment. So opportunity में तुम्हें ये लिखना है कि तुम approach करोगे. That's gonna be the key point. You're gonna approach this company located यहाँ पे. और तुम्हें ये लिखना है they're gonna come. तो वहाँ पे opportunity के सामने कट जाते हैं. So you have to write something like we are going to approach. Something that has to be initiated from you. वो opportunity sampling का like hint है. If you don't write this, it's not going to qualify as opportunity sampling. So like इसका आगे जो भी लिखना है लिख लेना, but you have to write this. We are going to approach, or the researchers are going to approach. क्योंकि opportunity के अंदर you go to people. So once you write that, then you come out to design. Design तीन तरीके के होते हैं. You know, like match pair, repeated, or independent image design. Experiment, ask their permission. We could define a criteria about the experiment, all right? ठीक है, and ask their permission that they are willing to participate or not. Question, वो तुम्हारे पास आ रहे होंगे, तुम उनके पास जा रहे होगे इससे पहले. You're going to ask their permission. ठीक है, you're going to ask their permission whether they're willing to participate or not. ठीक है, so that is going to come under opportunity sampling. ठीक है, लेकिन तुम्हें बताना पड़ेगा तुम कहाँ पे जाओगे, किस जगह जाओगे. So you're going to approach a construction company located close in your vicinity. Then you define a criteria, and then you're going to ask the permission person. तो बताना पड़ेगा तुम जाओगे उस पर्टिकुलर जगह. ये या अगर ऑनलाइन करोगे तो तुम बोलोगे कि you are gonna email the link to the person. Like it's gonna be starting from you. Opportunity sampling का ये होता है, originating from you. So like जब ये clear हो जाए, then you're gonna write the design. Specify करोगे independent है, repeated है, match pair है. So which one are you gonna go for? Independent. So basically are you saying that A group में 30% bonus वाले लोग को दोगे और A group में sense of achievement वाले लोग को दोगे? Are you saying that? And दोनों group के लोग separate होंगे? All right. So it's gonna be independent major design. 30% अलग वहाँ पे अलग. ठीक है. All right. So basically the way you're gonna check it is how many words you type right per minute while writing an article. ठीक है. So ये तुम्हारा DV है. देखो हम इस तरीके से effectiveness measure कर रहे होंगे. तुम मुझे एक सवाल बताना, ये हम क्वेश्चनर के थ्रू मेजर कर सकते हैं, इंटरव्यू के ऑब्जर्वेशन से? व्हाट विल अलाउ अस टू गेट दिस डेटा? तुम्हारे अच्छा मसला है कि तुम्हारे क्वेश्चनर के अंदर ना, तो सॉरी क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्वेश्चनर बता दिया, सो यू विल हैव नो ऑप्शन देन टू गो फॉर अ क्वेश्चनर. ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चनर के ऊपर करना पड़ेगा. यू विल नॉट हैव द ऑप्शन टू चूज अनदर मेथोडोलॉजी. ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि what you're gonna do is you're gonna give out a questionnaire, right? You're gonna give out a questionnaire. As questionnaire के ऊपर they're gonna write an article. ठीक है ना, उस क्वेश्चन के ऊपर आर्टिकल राइट करेंगे, and when they write that article, what you're gonna do is include some other questions on that as well. वरना questionnaire नहीं ना, खाली पेपर दे दे इसका मतलब तुमने. So you're gonna give them a questionnaire,
एक पोर्शन होगा जहाँ पे वो आर्टिकल लिखेंगे इन अ मिनट, एंड उसके बाद बैक साइड पे फर्ज करो कि कोई क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओपन एंड क्वेश्चन, देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ओपन एंड क्लोज पूछ सकते हो, बट देखते हैं कि क्या पूछेंगे। ऑलराइट, सो मेथोडोलॉजी के अंदर क्वेश्चंस हैं। व्हाट आर द फोर टाइप ऑफ क्वेश्चन? चार एग्जांपल क्वेश्चन देना है दैट कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई वेदर द पर्सन इज मोटिवेटेड और नॉट। तो मोटिवेशन मेजर करना बंदे का, क्या सवाल पूछोगे? एक तो उसने आर्टिकल लिख के अपना बता दिया कि कितना इफेक्टिव है, उसके अलावा क्या पूछोगे? चेक करना है कि इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, तो लाइक दोनों ग्रुप हैं, अब तुम्हें डिसाइड करना दोनों ग्रुप को तुम एक ही क्वेश्चनर दे रहे हो, राइट? तो क्या क्या सवाल पूछोगे? To what extent is this helpful for you? Question number one. Extent is the extrinsic group के लिए 30% bonus और intrinsic group के लिए sense achievement helpful in motivating you. अच्छा क्वेश्चन अब ये बता, am I getting leave blank या कुछ आगे ऑप्शन दूंगा? मतलब the people are gonna answer this question, right? So like, do I leave it blank या कोई option दूंगा so they can pick their answer from? Blank. So hence this is an open-ended question. चलो, question number 2 बताओ. What could be the second question that you can ask? Else would you say could be a motivating factor for you? Well, if you're gonna leave it blank, then yes. Question number 3. You can say, why is the answer you gave in question to a motivating factor for you? Please mention the reason. So yeah, and question number 4 is that four. I told you like 4 example questions. Four. Or question 4 is that would question 4 is that what could be question 4?
say thing एज एन एक्सट्रिंसिक ग्रुप के लिए पूछेगा कोई और सिचुएशन बता सकते हो जहाँ पे आप बोनस से मोटिवेट हुए थे या इंट्रिंसिक ग्रुप से पूछते तो कोई और सिचुएशन ऐसा बता सकते हो जो आपकी जॉब में हुआ था जिसकी वजह से आप सेंस ऑफ अचीवमेंट की वजह से मोटिवेटेड होते हैं तो obviously these four questions are open-ended questions तो तुम्हारे पास जो डेटा आएगा that is gonna be purely qualitative लेकिन quantitative data भी आएगा क्यों क्योंकि you're gonna count the number of words they wrote in a minute remember that तो quantitative भी data आएगा so क्योंकि quantitative data है you are gonna do data analysis तो यहाँ पे दो ग्रुप है राइट दो ग्रुप है एंड वहाँ पे एक ग्रुप में लाइक कितने लोग हैं आई डोंट नो क्योंकि भूल गया मैं एक ग्रुप में 30 लोग हैं दूसरे ग्रुप में 30 लोग हैं राइट एंड तुम्हें देखना है कि किस ग्रुप के लोगों ने ज़्यादा अल्फाज लिखे इन अ मिनट तो यहाँ पे तो मैं तुमसे पूछता मीन मीडियन मोड क्या लगाओगे एक ग्रुप में 30 लोग हैं दूसरे ग्रुप में 30 लोग हैं वहाँ के 30 लोग ने मीडियन यहाँ पे मेरा जवाब आया मीडियन और एल्स इमान क्या कहेगा मीन द आंसर इज मीन क्योंकि देखो तुम्हें ये देखना है कि कौन से ग्रुप के लोग ज़्यादा अल्फाज लिखते हैं इन अ मिनट राइट तो 30 लोग वहाँ के उनका टोटल करोगे एवरेज निकालोगे वहाँ के 30 लोग टोटल निकालोगे एवरेज करोगे एंड उनका एवरेज और उनका एवरेज कंपेयर करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा ऑन एवरेज ये लोग ज़्यादा अल्फाज लिखते हैं इन अ मिनट कंपेयर टू दैट ग्रुप तो यू गोना कंपेयर द मीन ऑफ ग्रुप्स अगर समझ में आ रहा है ऑलराइट सो उसके बाद एथिक्स वही जो तुम्हारे कंसर्न्स होते हैं प्राइवेसी राइट टू विड्रॉल वगैरह तुम लोग मेंशन कर देना नहीं नहीं you're just gonna write that बस खत्म उसके बाद आगे बढ़ जाओ एंड तुम एथिक्स तुम वही राइट टू विड्रॉ वगैरह कंसेंट वगैरह ये होगा वो मेंशन करते हैं जो स्टैंडर्ड होता है कंट्रोल्स व्हाट कंट्रोल्स दैट यू यूज इन एक्सपेरिमेंट्स सो लाइक व्हाट वुड यू गाइस से द कंट्रोल्स दैट वर यूज्ड चार कम से कम चार कंट्रोल्स बताना है क्या कंट्रोल्स होगा what's going to be the like four controls that you could say कि हमने अपने experiment में लगाए the controls in our experiment included done during job time are you saying that everyone was given the same amount of time to complete the article if so yes that's one everyone give the everyone was in the same office environment standardized the questions were standardized for each group इसके अलावा आखिरी क्वेश्चंस भी हो गए जॉब टाइम भी हो गया एनवायरनमेंट भी हो गया आखिरी you can say that everyone was from the same industry so like everyone was from the same industry that is the construction industry so that's also a factor that you control क्योंकि कोई फैशन इंडस्ट्री का होता शायद मसला आता है कि वो शायद ज़्यादा आदी होता लिखने में समथिंग लाइक दैट
तो खैर these are the controls that you mentioned, and in सबको, so like if you address all these points, ये तुम्हारा paper design a question का answer बन जाता है. So for this, so please remember, देखो तुम्हारा जो असल concept check हो रहा है ना, that is being checked यहाँ पे, what questions you ask. क्योंकि देखो, this question, yeah, your experiment is going to is about extrinsic and intrinsic motivations, right? So there, यहाँ पे हमेशा चेक होता है कि whether you understand the concept of intrinsic or extrinsic motivators or not. ये दो जगह चेक होता है. एक तो यहाँ पे जहाँ जिस तरीके से तुम ऑपरेशनलाइज कर रहे हो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स को, कि बच्चों को समझ में आता है भी कि नहीं ये वो चीज़ें क्या है. नंबर टू, क्या सवाल पूछते हो उसको मेजर उसको लाइक फाइंड आउट करने में. तो तुम्हारे सवाल यहाँ पे बेतुके के नहीं होने चाहिए. इट शुड बी रिलेटेड टू मोटिवेशन. एंड तुम्हारा जो ऑपरेशनलाइजेशन है ऑफ व्हाट इज इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इन द एक्सपेरिमेंट, वो भी बेतुका नहीं होना चाहिए. या अगर तो लाइक बेस तुम कह सकते हो इसका मेथोडोलॉजी का वेटेज ज़्यादा होता है, क्योंकि कोई भी सैम्पलिंग चूज कर सकता है, कोई भी डिज़ाइन चूज कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. द मेन थिंग इज सवाल क्या पूछते हैं. दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन ए टू डिज़ाइन क्वेश्चंस. व्हाट क्वेश्चंस यू आस्क, ये इंटरव्यू में क्या पूछोगे, या ऑब्जर्व क्या करोगे अगर ऑब्जर्वेशन के अंदर आता. हाउ विल यू नो हु इज मोटिवेटेड बाय डूइंग एन ऑब्जर्वेशन. ये एथिक्स बड़ा पॉइंट नहीं है. सबसे बड़ा पॉइंट मेथोडोलॉजी का, एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू वर्क ऑन, आस्किंग द राइट क्वेश्चंस. ठीक है, एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन AS experiments and A2 experiments. उसके बाद what's gonna happen जब तुम ये सवाल करते हो ना, ये वाला, तो let me open one paper. Let's suppose ये इसी क्वेश्चन का पार्ट बी है. ठीक है, भले दूसरा पेपर खोलना दूसरा क्वेश्चन होगा, लेकिन पार्ट बी हमेशा एक ही वर्डिंग में आता है डिजाइन क्वेश्चन वाले का. See, whatever the question is, यहाँ पे इसका पार्ट बी सेम होगा. दिस पार्ट बी सेम, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट बी भी सेम होगा. ठीक है, तो whatever जो भी ऊपर एक्सपेरिमेंट, पार्ट बी इज गोना बी दिस. एक्सप्लेन द साइकोलॉजिकल मैथोलॉजिकल एविडेंस ऑन व्हिच योर रिसर्च इज बेस्ड अपॉन. पूछना क्या चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि ऊपर जो भी सवाल तुमने पूछे हैं, या जिस चीज़ के ऊपर तुमने एक्सपेरिमेंट किया है, obviously you guys did an experiment on intrinsic and extrinsic motivators, right? तो क्या तुमने अपनी तरफ से कोई थ्योरी लाया, या इसकी थ्योरी पहले से मौजूद थी, अगर थी उस थ्योरी के बारे में बताओ. सो ऑब्वियसली अभी अभी हमने एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने से पहले इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर की पूरी थ्योरी पढ़ी थी. तो साइकोलॉजिकल एविडेंस में उस थ्योरी की समरी देनी है. व्हाट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स, इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स. तो इसका बेसिक आंसर क्या होगा, जो तुम्हारा सवाल है, your definition of extrinsic motivator, this entire thing is going to be the psychological evidence, क्योंकि ये समरी है ना उस थ्योरी की. सो साइकोलॉजिकल एविडेंस में उस चीज़ की समरी आती है ऑन विच योर एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड अपॉन. किस थ्योरी के ऊपर बेस्ड है उसकी समरी दे दो. सो दिस इज व्हाट यू राइट इन द साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, साइकोलॉजिकल एविडेंस ऑफ योर पार्ट बी ऑफ द एक्सपेरिमेंट यू जस्ट डिजाइन्ड. ठीक है. Alright. उसके बाद हमारे पास आता है मेथोडोलॉजिकल एविडेंस. कहाँ गया अब. Alright, so question was कि psychological evidence दे दो और methodological evidence दे दो. Like, let me open the question paper again. So psychological evidence अगर clear हो गया तो methodological evidence में क्या करना है. Methodological evidence के अंदर whatever you did in your research, right? Whatever you did in your design experiment, right? Pick two features of your experiment. Pick two features of experiment. क्या मतलब? डिज़ाइन कौन सा लगा, या सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी लगा, या क्वेश्चंस कौन से टाइप के पूछे, या डेटा किस टाइप का आया. द डेटा दैट यू गेट, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बोथ. क्वेश्चंस टाइप क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड, डिज़ाइन इंडिपेंडेंट रिपीटेड, जो भी है, सैम्पलिंग टेक्निक, वॉलंटियर अपॉर्चुनिटी, जो भी है. पिक टू, या कंट्रोल्स के ऊपर बात कर सकते हो. पिक टू फीचर्स एंड उसको जस्टिफाई करो कि मैंने ये डिज़ाइन क्यों लगाया, या मैंने सैम्पलिंग टेक्निक क्यों लगाई, या मैंने ये डेटा क्वालिटेटिव क्यों लिया, क्वांटिटेटिव क्यों लिया, दोनों क्यों लिए. जस्टिफाइड.
फॉर एग्जाम्पल इन योर एक्सपेरिमेंट जो तुमने अभी डिज़ाइन किया, तुमने अपॉर्चुनिटी सैम्पलिंग सेलेक्ट किया था. सो द वे यू कुड डू इज के opportunity sampling was applied for this experiment because while using opportunity sampling, it would be much more convenient to क्या कहते हैं, gather participants for our study. As if we were to इसका reason से देखना, if we were to apply volunteer sampling, we would have less chances of acquiring participants for our results, as they are already working people and they will be less likely to volunteer for a task that is not their job. So hence, opportunity sampling was selected. You justified why opportunity sampling was used. दूसरा, कोई choose करते हैं, you could say कि why open-ended questions were asked. Open-ended questions were asked so that we can get in-depth qualitative data and insight regarding what factor motivates people and how that factor and what else motivates people. If we were to ask quantitative, if we were to ask those in the questionnaires, we will get quantitative data and we will not be able to understand the reason why people get motivated because of their motivators. So that's how you justify your 2 points. किसी भी 2 point को justify करना. That's your methodological evidence as well. Psychological is the theory, methodological is the two features of your research. It's not gender bias. ये तुम्हारा सैंपल के अंदर आएगा कि both male and female participants were selected as samples so that the study is not gender biased and it could be generalizable to both genders. तो सैंपल के अंदर आएगा. But you're right कि इसको भी उठा सकते हैं methodological evidence के अंदर. Whatever you choose, you have to justify it. वो methodological evidence के अंदर आएगा. सिर्फ और वो भी दो चीजें. So is the methodological evidence part understood? Iman, you get it? All right. So ये वाला सवाल तो I want you to do this question 8A and इसका जो 8B होगा वो ये होगा, ठीक है ना. जो भी क्वेश्चन होता है इसका 8B पार्ट B के वर्डिंग सेम होते हैं. As your homework, this is part B, explain psychological and methodological evidence in the study of which it is based. Let's copy it, ठीक है. क्या करते हैं, so that's your part A and part B. Within the same design, we can create a new one. This is a new experiment, right? तो obviously तुम्हारे जो आंसर होंगे वो न्यू होंगे, अपनी तरफ से आएंगे. जो पहले हमने डिस्कस किया था वो तो खत्म है, वहाँ पे खत्म हो गया, right? तो ये नया क्वेश्चन है. This is a new question. This is something else. So you're gonna have to come up with your own answers. ये देख लो क्राइटेरिया अगेन कि क्या क्या चीज़ें मेंशन करना है. या चीज़ पूरी चीज़ की स्क्रीनशॉट ले लो. Hint to you guys, कुछ points कभी कभार applicable होंगे, not always they're applicable, ठीक है. अब क्या मतलब इससे, you're gonna understand when you solve the questionnaire. मतलब for example अगर quantitative data नहीं आता तो obviously data analysis point apply नहीं होता, right? तो कुछ point कभी कभार apply होते हैं, not always कि ये सब mention करने पड़ते हैं, ये general होते हैं. कभी कभार special cases होते हैं where you don't have to mention all the points. तो भारत, but this is your question. So यहाँ पे you don't have to investigate extrinsic. यहाँ पे एक ही चीज इन्वेस्टिगेट करना है. Hint for you guys, अगर अगर दो कंडीशन नहीं है, एक ही कंडीशन है, तो उस स्टडी के अंदर IV होगा या नहीं होगा, पहले सोच लो. मिलीग्राम की स्टडी, AS वाली स्टडी के अंदर भी एक ही कंडीशन था, राइट? दूसरा कोई कंडीशन नहीं था, तो क्या उसके अंदर भी IV था या नहीं था, ये भी सोच लो. सो यहाँ पे कोई चीज़ हम कंपेयर नहीं करें, यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करें, फाइंडिंग आउट करें, राइट? एक्सप्लोर कर रहे हैं. तो एक्सप्लोरेटरी स्टडी में
अलग पॉइंट्स आते हैं, मतलब सारे के सारे पॉइंट्स नहीं आएंगे। और कंपैरेटिव स्टडी जहाँ पे एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हैं, वहाँ पे कुछ और पॉइंट्स आते हैं। मतलब यहाँ पे सारे यही पॉइंट आएंगे, सब ने कभी सब के सब इस्तेमाल होंगे, सेलेक्टिव होते हैं। किसी में ये दो नहीं होंगे, किसी में ये चार नहीं होंगे, किसी में वो पांच नहीं होंगे, इस तरह। लेकिन इसके बाहर कोई और पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है। तो बहरहाल यू हैव टू यूज योर ब्रेन कि यहाँ पे कौन से पॉइंट्स अप्लाई होंगे। शायद IVDB का नाम, हु नोस, शायद लाइक ग्रुप्स डिजाइन करना हो, maybe, I don't know, but it's up to you guys to like figure that out and ये question solve करना है। Any questions? All right, so like please submit it to me before next class so that we can progress with this chapter. So Iman, questions? Any questions? Yes, Saturday. उसकी टाइमिंग क्या होगी? क्या था, 4 बजे आई गेस। 1 to 2:30, 2:30, 4 बजे, 4 बजे या 4 बजे, 4 o'clock. All right, guys. Here I'm gonna sign up. See you on Saturday. Allah Hafiz.